Muted. All right, let's do this. Sorry, slightly late because of traffic today. We'll get this going. All right, live is good. Everything is good, looks good. All right, good morning, everybody. Wednesday, September 3rd, 9:19 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SuperAreas.com. Thank you for coming in person as well as online. Let's see what is happening. Yesterday, market fell down when it opened. Quite a few craziness. Price went to S4, and then it within that 24-hour period, price shot up to R2. So yesterday was a major swing from all the way down to 23,000, and then back to. So it took a $800 move yesterday. Anyway, whatever is done is done. Every day is a new day. Anything I share is not financial advice, just for informational, educational, and entertainment purposes only. Not responsible for your wins, losses, anything like that. And let's get started with this. So, Forex Factory is saying that we have 10 o'clock important news, red impact, JOLTS job opening. So, you just have to be careful around 10 o'clock. Things will go crazy. So, mid bands, divergence, three candle, and you really have to kind of be. Yeah. Yes, so just a tweet came in from Trump that I just they're doing some operations there, coming some drugs coming out of South America. Anyway, 10 o'clock, JOLTS opening, and let's look at night's highs and lows. Where are we? Gold is all time breaking all sorts of records. Craziness. It is just crazy. I think it went as high as 36.23. So that gold has never seen these kind of prices before. So gold truly went crazy in the last week or so. I think last 5 days you have so much rapid buying of gold that it's in the history of gold. 23 is the high number. Anyway, that's beside the point of our daily markets that we do. Base is up, pressure is down, so things should come down. But let's see. Where are we right now? What's the night high is 460, which was yesterday's R2. If you shorted from 460, you are already done, but we are back in. So price is opening in R2. मैं सर 5 मिनट्स में आपके बाद ये बस ब्रीफ के बाद आ जाता हूँ. No problem. So because Majid Bhai is not here, Vikram Bhai is gonna do the replacement stream, and I will get him going shortly. And we have the low of 23,298. So these are the two numbers. So $162 move. We are opening at 450. So price is right now at R1. So base is up, but pressure is down. Strike price for today
which acts like a support and resistance. So if it breaks 450, which it already has, so it should start to change the trend to upside. Anyway, so where am I gonna sell from? 600. So 23,600 is my plan. I know. 23,600 expected high, high to go low is my plan. Where am I gonna buy from? 23,100 expected high, expected low for NASDAQ. So 23,600, about 150 points from here, and 23,100. So if it falls in whichever direction, we'll go with that. All right, so we're waiting for Daniel's brief, and then we'll go from there. Let me open up my areas and let's get my NASDAQ को वहां से सेल करूँ. नहीं 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 ये NASDAQ हाँ ES अगर मैं अभी चार्ट्स मेरे खुल जाए तो मैं ES की रफ आइडिया निकाल लेता हूँ. Just waiting for Daniel's brief and then I will start Vikram Bhai's live stream there. No problem. So gold areas got updated too. Where is gold? If somebody wants to sell from, very close to expected high anyway. So our expected high starts around 30. So we are at 21. So gold will start to get into expected high very soon. Whereas ES right now, ES has a high of 60, low of 25. We are very close to opening at R2, above R1, close to R2. What's the dollar gap between those? 162 divided by 24. So each time NASDAQ is moving, ES is moving $1, NASDAQ is moving $6. So that's the gap for today. So it kind of came from so third candle rejection happened on ES on 3020 and also ES on 1510. The third candle rejection. You start to spot these, you got your 1 point coming in all the time. Not a big deal. So 442 is the number. So high to go low is the instruction that's been given. Yes, buying and selling. Let's see. Wait, let me charts are opening. I'm gonna wait for Daniel's brief as well. Which okay. All sales are done. Apex sale is done. Bullknot sale is done. So sales are kind of done at the moment. Something Apex extended था. नहीं नहीं वो extended है उसकी अगर आप पास करेंगे उसकी फीस की extension हुई है. अभी कोई इनकार नहीं आने का है सेल. नहीं अभी कल ये लेबर डे की सेल थी आखिरी. 90% off, correct. Apex में सेल थी कि बुलनॉक? Apex की, बुलनॉक्स की, yes,
कल सारी सेलें ख़त्म हो गई जी। Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Hello, guys. Can chill. Microphone check if you can hear. Ji, Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, Jen. Ji, good morning, everybody. Good morning. I can't see the chat because I just logged in. So, Mazrat ji, I'm so sorry, guys. Good morning, Akshay, Alpa ji, Amir, Arun, Yaz bhai, Faraji. Good morning. Farhan, good morning. Farooq bhai, Gaurav. Everybody, good morning, Ji. Everybody, good morning. Quick review for a disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not attended as trading advice that just meant to enhance your trading decision but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday. You'll make it today. Always be on your toes. Always place your stops and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat, and all the areas we have on our SuperAreas.com or on our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, NASDAQ, Dow, Russell 2000, especially S&P and NASDAQ, went to our extreme low yesterday. Extreme low. NASDAQ exactly hit our extreme low. S&P 100%. 70 was the low number, but 71.75 bounced back up. And both markets, very nice retracement to the upside. 74% S&P, 89.5% NASDAQ retraced back up. And NVIDIA in 4 days lose $250 billion in their stock value. And NVIDIA is moving the market in these days. So overall, today, our base is up, pressure is down. So high to go low would be a good strategy. And keep eye on our striking price, guys. Today, keep eye on striking price. So striking price will play a big role. And today, S&P 500, our high is 73 to 85, 64, 73 to 85. S&P, the low is 63, 88 to 76. NASDAQ, our high is 23, 580 to 650. Our low is 23, 170 to 100. Actually, big push to the downside, 120 points less than one tick. S&P full swing to the downside. NASDAQ is 440, 84.25, and Dow is 752. You see now, if you make the comparison, Dow is not moving. Mean Dow is losing that value of power since the Trump came. So overall, our high to go low would be a good strategy. First high, then push to the downside. Other markets we have, if you look at the British pound and euro, British pound yesterday went down, today creates a diversion to the upside. If you see very nice, beautiful diversion to the upside this morning, euro session after 4 o'clock, 3:30 it came down, and then after 3:30 pushed to the upside, retraced back up 45%, not much movement. Canadian dollar is down, still down. Yesterday went to our expected low, and from our expected low, we have a retracement, but it's not giving us a lower high. So it means either we'll see a low of yesterday got tested, or price gives us anything higher than 72,700 to get our lower high, because this is continuation of our swing to the downside, swing to the downside. And then we have euro, just dead flat diversion at PP. Same thing, it's just copy of
British pound, sitting at magenta midband, actually hold by magenta midband, and push to the downside. Crude oil, yesterday crude oil, if you remember, morning it came down around after 9 o'clock, after you see 8 to 9 came down, and then pushed to the upside, gives back everything. I would say after 2 a.m. yesterday, I'm talking about yesterday 2 a.m. till now, this whole move was manipulated move. If you remember, first it went up 2 o'clock, went up, and then came down 7 o'clock, and then bounced back up after 9 o'clock. It means that was just hitting the stop. People was trapped, and they just kick everybody out from the trade. And right now, it came down $2, full $2 push to the downside, in between S1 and S2 area. So crude oil is in my opinion, it should go further up towards the PP and test the PP area. FDAX is down. FDAX Euro session was up, but after you see after 8 o'clock, it started bouncing back down, and right now just flat in between our PP and S1 in the value area. Gold is up. Gold is crazy. Yesterday, if you remember, we were expecting gold to come down, but gold is up because a lot of people are investing in the gold, and gold and cryptos is the future. Very close to our expected high for the day. Actually, almost hit our expected high for the day. If you see, our expected high for the gold is 36.30, and it just shy, almost $2.30, $2.30, and gold. Gold should hit our expected high for the day, guys. It should hit our expected high, and we'll see if gold retrace back. Even small retracement, you see the gold went up $79, retrace back down 30% of that, and extension to the upside $35. It's crazy. After 2 o'clock, I'm talking about Euro session, took gold to the upside, and definitely we'll see US people will hit our expected high for the day. Yesterday, it hit our extreme high. If you see 36, 17, 16 area, and from there it retraced back because that is the definite area for gold to bounce back down. And then today it at our expected high for the day right now. Copper at PP went to extreme high, actually, expected high, and trying to test our extreme high, but did not hit. Today, this morning, it get very close after 5 o'clock, if you see, trying to test yesterday. And yesterday high is today our expected high for the day for copper. And copper should go further up because US, the tough tug of war going on with the BRICS. Now the US will fight with the BRICS, and we'll see what will happen to the copper. Silver is up, silver $41.96. That's a very nice push to the upside. 88 cents, just 88 cents after 10 a.m. yesterday. Came down around 45%, and then extension to the upside, break our high of yesterday. Actually, not much. It creates a diversion, just a diversion, and we'll keep eye on our September 1 high. That's also it should get tested by maybe by today to after 12 o'clock. Natural gas, banana. If you look at the natural gas, very strong push to the upside, reached to our expected high, hit 100% our 113 cents and $3.13 area, and just paused at that area. Really nice, beautiful push. I'm talking about after 7 a.m. After 7 o'clock, it just banana just went up. Very strong push, 16 cents push. That's a big push. $1,600. That's a big push to the upside on our natural gas. Bitcoin is up. Bitcoin break our yesterday high, and at our yesterday expected high area, Bitcoin should go up. Gold, and I told you guys now future is cryptos and gold and all the commodities, even silver, and very nice push to the upside from after 3 a.m. $1,435 push to the upside. It's a diversion, yes. We are in a diversion, but it should go further up and give us a full-fledged diversion
to the downside. And Ethereum is same thing, guys. If you look at the Ethereum, yesterday went up $166, retraced back down 99, I would say 100%, only 50 cents less than the yesterday push. I mean, it gives back everything. And then this is a true retracement. Today we have $142 push to the upside. So overall, if I look at the news, guys, we had job opening at 10 o'clock, and usually job opening, green to go down, red to go up, but in these days, it goes in opposite direction. If you see in these days, a lot of things are opposite. What's going on? Nobody understands this thing, but in my opinion, there is no tomorrow like the big whales are thinking before the black swan come, or maybe we'll have a big war. And they're just cashing out everything, trillions and trillions of dollars they're taking out from us, like individuals. And we have to be very careful with that. Then FOMC members, Kashkari speech is coming at 1:32 p.m. Beige book is coming. So if you're done from any area, just call for the day to protect your principal, guys. And again, guys, be careful and just take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Good morning, Sakir, Manish. Good morning. Good morning, everybody. 2 minutes, guys. I'm just gonna go and the price is right now between R1 and R2. Still trying to figure out which way it wants to go. So I'll be right back. Just gotta fix his stream. और सर 600 और all right. Sorry. That's okay. Step one. बैठे नहीं सिर्फ आप देख लें एटलीस्ट 10 days तो वो नहीं आ रहे मुझे लगता है ओके एक मिनट फिर मैं लिख लूं हाँ मैं आपको लिखी लिखाई है मेरे पास अच्छा हाँ इसको हम करते हैं ऑन ये मेरे पास सारी इंस्ट्रक्शन ये ऑन कर लिया ये ग्रीन हो जाएगा ठीक है इसको लगा दें इसके अंदर ओके ठीक है ये है आपका रिसीवर इसको ऑन करेंगे तो ये इसके साथ पेयर हो गया ठीक है एक वाला पेयर ये आप माइक लगा दें आपने जाना है 2 वेबसाइट्स पे पहली जाती है ये इसका नाम है वीमियो ठीक है इसमें हम करेंगे लॉग इन और माजिद भाई का ऑलरेडी लॉग इन है ठीक है जिस तरह आपने उधर किया था ये लिखा है न्यू होस्ट इवेंट रीयूज सेटिंग्स सारी वही सेटिंग्स तकरीबन रहती हैं तो कोई भी उठा लें मिस्टर जुनैद वाली उठा लें यहाँ पर आप विक्रम कर दें ठीक है दैट्स इट क्रिएट सिर्फ अब यहाँ ये देखना है कि माइक और कैमरा जो है ना वो करेक्ट वन हो ये आपका कैमरा आ गया इसको ये किया प्लस बेसिकली आप स्पीकर को सीन के अंदर डाला ठीक है और ये जो माइक है ये है वायरलेस माइक और ये मेक श्योर ये ग्रीन लास्ट थिंग वी विल डू इज एम्बेड दिस एम्बेड करना है ये एम्बेड का बटन दबाया इसको जाके मैं आपकी इधर कर देता हूँ अभी के लिए मैं सिर्फ अब पूरी दुनिया में चला गया कि आप लाइव हो गए गो लाइव और ओवरले लगा दें ये माजिद ने गलत है मीडिया graphics speakers done you're live that's it So when we close
या सो आपने टू यहाँ तो ये स्टॉप करनी है लाइव स्ट्रीम और यहाँ जाके सिर्फ अनलिंक कर दें ठीक है so you will see starting people starting to या आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप है आपके पास एक व्हाट्सएप है दो अपने फोन पे हाँ नहीं आपके लिए स्पेशल नंबर आ रहा है ना जो लिस्टेड हो जाएगा वेबसाइट पे तो अगर किसी ने आपसे रीच करना है तो आप बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें मैं आपको नंबर देता हूँ ठीक है अच्छा ठीक है फिर एक दो व्हाट्सएप अलाउड है ना एक फोन के अंदर तो अगर या पर्सनल डाउनलोड कर लें या बिजनेस जो भी फ्री है और उसमें आपको मैं सिम देता हूँ दैट्स इट बट योर लाइफ all right guys he is live so let's see price touched R1 and went down okay gold is coming down fast came from 27 very close to October high डायरेक्शन बन नहीं रही अभी सो लेट्स सी हाँ वही अभी स्लो चल रहा है क्योंकि कल जो कितनी गिरी थी वापस आई तो अब मैं कोई नंबर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से एंटर करें यहाँ लेट्स सी ये बुलनॉफ की कौन सी सिस्टम आईडी वहाँ होती है एक मैं देख रहा हूँ उसमें वो शो रिथमिक पेपर ट्रेडिंग रिथमिक पेपर ट्रेडिंग लेकिन इसमें नहीं चल रहा आपने एग्रीमेंट साइन किया पहले उसमें यूज करता था ना फोन में हाँ उसमें चल पड़ता था इसमें नहीं चल रहा एनी डेस्क थे एनी डेस्क एनी डेस्क एनी एनी डेस्क थे एनी डेस्क एनी डेस्क अच्छा नंबर दो हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दें नंबर दो हाँ trying to figure out which way it wants to go right now stuck at a mid band of 60-minute I think so yeah very close all right he is coming down fast I was short from that red box on 3020 so right now price is at 60-minute mid band at the moment good morning Ji.
हाँ वो है, लेकिन उसमें स्लाइडली बग है थोड़े से, लेकिन वो चल अच्छी रही है। लेकिन आप उसको भी मैनुअली चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरी मैं आपको उसकी वीडियो देता हूँ, हाउ टू स्पॉट दैट, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है जी। All right, price is heading down, coming down from, I was waiting for at least R2 tonight session high. Let's see. Next second. ये क्या डाउनलोड किया आपने? नहीं, ये वाली ऐप है, प्रो वाली। हाँ, दूसरी वाली नहीं, प्रो वाली। ये चले जी जी। पूछ रहा है ना, जैसे अकाउंट 1 मंथ की होती है ना, जिसमें आपने वो अकाउंट क्लियर करना होता है। हाँ हाँ, उसके बाद भी वो चल रहा होता है। हाँ हाँ, वो देखें, अगर आपने या पास नहीं किया या फेल किया, अगर फेल किया तो रीसेट हो जाएगा। अगर पास कर लिया तो पास नहीं किया, जैसे रोल ओवर, उसको वो फिर आपकी मंथली चार्ज होगी और मंथ 2 में चला जाएगा। ओके, हाँ, तो ये ना कि 2 अकाउंट चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाला का मंथ क्रॉस हो गया ना, हाँ हाँ, और उसमें अब जैसे प्रॉफिट बन गया, ठीक है ठीक है, वो अगले में हो सकता है जैसे। बिल्कुल, आप उसको, अब आपके पास एक और मंथ आ गया ना, ओके, उसको कंप्लीट करने के लिए। वो है नहीं वहाँ से, पाकिस्तान से आए नहीं नहीं, अभी नहीं। So we are at a mid band of bit of a divergence on ES, not really, but let's see. ES is within R1, R2, and NASDAQ wants to go to R1 again. Let's see. Pulled back up. That shot up quickly. Still trying to.
409 stuck between. Gold is trying to go back up, so let's see. पीपी से बाय करेंगे? क्योंकि रसल ने नाइस सेशन हाई तोड़ा हुआ है, अच्छा, बाकी तीनों नीचे हैं। S3, if I'm thinking of buying, so right now 60-minute mid-band on NASDAQ is giving it a little bit of a support. Let's see. $390, where's price right now? Price is between, and right, ES wants to go down more. Where are we buying? Buying, I'm not buying until at least, let's see if pivot does anything. If it breaks the pivot, then we will decide. So PP is sitting off NASDAQ near S1. So it has to break that first before I buy anything.
Because if the swing is almost 430 points, what's the retrace? Super fib. This is 23,458, 433 point swing from a lower high. 241. First, it has to break 270. That's a pivot of 60 minutes. And then pressure is down. Look at the magic bands are screaming to the downside, right? So, yeah, thank you very much. News, guys. Big impact news. Crazy news. Don't know which way it's going to go. So be ready. 100% be ready. It's going to move any second to and done. Boom, 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 boom. Down, down, up, down. Gold shot up to 20, so it's sliding. So factory orders are very same as forecast, but lower. So pending job openings is what we're waiting for. Pending. So much lower jobs opening than actual. So we should be heading down now. Should be. So it's red, much lower than forecast, much lower than previous. So let's see which way it wants to go now. First, maybe pull up a little bit, liquidate everybody, and then shoot down. Let's see. Time will tell. But news is bad, though. So let's see which way it pulls up or down. Right now, trying to go back to R1. $421. Let's see if it breaks 458, which is overnight high. 430.
Thinking. Let's see which way it wants to go. Come on, gold, come down now. Gold has divergence on 30-20, guys. Just know. Gold has a divergence on 30-20. And divergence got created. Let's see. ES is back in, NASDAQ is back in R1 zone. Let's see when the reversal begins of this news. Having hard time with R1. Will it go and fill up the value area for ES? Good question. Let me see. See, value area is really, really low. So at least it should go, ES should go to S2. S2 will act like a good support because ES value area is sitting 64.12 to 63.90. Yeah, 12 to 90. Yeah, exactly 85. So value area is important. Let's see if it tries to fill it. At least it should go towards that, but let's see. We sit and wait and watch until we figure it out. Right now, prices in both prices are in R1. We're back in R1, above R1, both markets. Say struggle. Still didn't break, so it broke night session high, 60. So morning high became 23,460. So upper range of R1. So 23,461 became the high for today. Morning trade.
चल पूरे पूरे 60 को ले लिया आपने? अच्छा 15 पॉइंट ले लिया वहां से। गुड गुड। ES is in a bit of a divergence. Let's see. Let's see. Maybe it'll go and retest that one more time. Who knows? That's the third candle rejection. देखें एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बन रही है ES में. So let's see if which way it goes from here. वो मैं आपको करवा दूंगा. No problem. हाँ वो फेल हुआ ना. See again touching mid-band divergence. Both prices are trying to work within R1 zone at the moment. Green to buy, red to sell. Touched mid-band, went back up. Is the gap gone down? 174 divided by 24. Yeah, gap has gone down to gone up to 7. So let's see. So officially the 460 zone is done, right? If you sold from 460, you're literally done from R1 upper band. But it's not breaking the 60-minute mid band, which is the 385 number. It's not breaking that. Let's see. बाकियों ने पीपी को तोड़ा है. पीपी ओ वैस भाई बस खामोशी से देख रहे हैं कि क्या होगा. हाँ सिंक सिंक है ना. सिंक नहीं है. ये लगता है नैस्डैक ईएस आज ले जाएंगे. हाँ आज उनकी है. But let's see. Because 385 is tough one to break right now.
गोल्ड का प्रेशर डाउन क्या कब आता है? क्या नंबर दिया हुआ गोल्ड का? कौन से नंबर पे किया है गोल्ड का? अभी दरिंद्र है अभी नंबर नहीं, मैंने 15 से किया हुआ ना, कल रात का जो था ना, कल से मैं 15 से शॉर्ट हूँ, कल से शॉर्ट हूँ। बहुत खतरनाक है। अभी कंफर्मेशन नहीं आई मेरे पास। क्योंकि पहले उसने हायर वो डाइवर्जेंस तो अच्छे ट्रेड दे गया था गोल्ड में, 30-20 की डाइवर्जेंस अच्छे ट्रेड दे गया। अब कुछ ना हो रहा हो ना तो फिर लोग कह रहे हैं यार गोल्ड ही कहना शुरू कर दो, सोन क्रूड ऑयल भी पढ़ना शुरू कर देंगे। 400 450 400 उसके दरमियान ही आस पास के 60 मिनट का मिड नहीं टूट रहा, हाँ वो जो 60 का मिड है ना, 60 मिनट मिड इज सो स्ट्रांग राइट नाउ दैट इट्स 384, it's not breaking that number. So it has, maybe after the next candle, maybe after maybe 11 o'clock it will break. Let's see. Because right now today NASDAQ is driving S&P. S&P का अपना कुछ नहीं है, वो NASDAQ ऊपर जाती है. So एक्चुअली इसकी वजह ये है ना कि गोल्ड अभी गोल्ड को ड्रॉप होना चाहिए, गोल्ड ड्रॉप होगा तो ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोगों ने पैसा मूव करना है ना. गोल्ड जो है वो ड्रॉप ही नहीं हो रहा, गोल्ड नहीं ड्रॉप हो रहा. गुड. मैंने सेल करना था MNQ में, MGC में सेल हो गया गलती से. इतनी टैब्स करीब लगी हुई हैं. है नहीं, लॉस में हूँ. मैंने MNQ पे सेल करना था 2 माइक्रोस, इस अकाउंट में मैंने वो सारे ही गोल्ड में सेल कर दिया, तो वो गोल्ड चढ़ रहा है. Otherwise, I would have been done from 460, but it's okay. You have tabs that close. Yeah, it's okay. Gold is what, 22, 27 तक गया था. Let's see. I think it should turn back now. It's the 30-minute, 30, 20 red box now. Let's see. Yes, boxes are there at 47 above R1. Let's see. And one box is there at $24 gold. He is trying to go back into R1 again. Yep.
Both markets back into R1. It's not made a higher high yet. It has to break 51. Let's see if it breaks 461 this time. We're back into 450. Sorry, guys, nothing to say. Price is moving, not moving in any direction. It's stuck between R1 and a 60-minute mid-band. So let's see if it breaks 460, then we'll see if that makes it as a support. But until then, $451.
Gold is very close to expected high, guys. It actually touched our expected high. Another $37 up. All right, it has broken officially R1. New number became 465. $471. Now it's broken. $472. नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आया, नया कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं शुरू हुआ। नहीं, अभी नहीं, 15 सितंबर के बाद. Touch the mid band. Mid band trade passed. Couple of points came from 48 to 51. 3 points are done. Good morning, जी. ईमेल आई आपको? कोई सेल खत्म हो गई. चलो कोई आ गया. ठीक है. So highest it made today was 472.
नहीं तोड़ी यार वन, बड़ा स्ट्रगल है। ये गोल्ड नहीं उतर रहा ना, गोल्ड सेल पे कहाँ से? अच्छा कितना ऊपर? 240। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सेल में है ना, तो आना तो है एटलीस्ट मेरे ख्याल से इसको $35 उतरना चाहिए। 4 दिन से 100 चढ़ा है, तो इसको 30%। चले 4 दिन का 100, 81, 15, 17। ऑलवेज क्वेश्चन इज व्हेन, बिकॉज एट दैट टाइम इवन 2 or 3 माइक्रोस आप लंबी राइड ले सकते हैं, राइट? सो ES is struggling to break R1 like नहीं सर, वो तोड़ने उसको बेस बनाने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी इफ इट गोज टू R2 because both markets are truly struggling to see if NASDAQ is coming third time to see if I can get some more liquidity to go inside and get into this game. The 30-20 mid-band worked. Let's see. So we're waiting for at least night high, which is 60. NASDAQ has gone to 72. Let's see if it breaks. Yes, is third candle. One more candle. I'm gonna, you will make. Can I give you my editor? Sure, sure. Then, sir. $467, $471. Let's see. Okay, sir. They. I need 1190. हाँ जी, accept कीजिएगा. आपके स्पैम में तो नहीं आई ना वो मैसेज? ईमेल रिप्लाई किया है उन्होंने? लॉग इन करेंगे ईमेल. So 476 of today's high. Good morning जी. अंदर ही दिखा लें उनको. मैंने करना है नहीं चलो नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, उनके कहेंगे मेरी फाइल इंपोर्ट ही नहीं होती, ये मसला दिखाए ना, स्ट्रैटेजी का मसला नहीं है. उनको दिखा दें कि ये एरर आ रहा है, क्योंकि वरना मैंने करनी होती तो मैं तो अनीडा से कर. जी जी.
All right, new high 476. So it's breaking R1 478, 480. 510 is our R2, guys. Even though news is bad, but सर नहीं है स्पैम में। okay. And ब्लॉक्स ने जवाब दिया है। नहीं है। आपने आई क्लाउड भी ऑन किया हुआ। Okay, this is gonna slow down big time. We'll get you legends. ये भर दें। Legends trading, so 485, still climbing up. लॉगिन करना सर अभी। हाँ जी, अब आपको ईमेल आएगी। कंप्लीट करना सर इसे भी। है नहीं? रजिस्ट्रेशन बिलो कंप्लीट। हाँ जी, ये नहीं, सिर्फ आपने उधर कंफर्म कर लिया, that's it. So NASDAQ is trying to get to R2. There's a divergence on ES. You have two higher highs on 3020, but strength and BBs have not gone up. So just saying there's a divergence on 3020. एक पहले कोड डाल दें, आपका फुल प्राइस ना चार्ज हो जाए।
should be, yeah, $50. There you go. ये फॉर्म भर 485, 487. Newer high 490. So number starts from 510. Credit card. हाँ जी, हाँ जी. हर फॉर नहीं इसको स्क्रॉल नहीं करना. एक सेकंड. इसी बॉक्स को एवरीवेयर एंड देन या नाम डाल दें. हैं? यही प्राइस चलनी चाहिए. नहीं नहीं, आप चार्ट देख रहे हैं. चार्ट बहुत स्पीड से चलते हैं. वो मैं 15-10 का तो चार्ट देखता ही नहीं है. आप देख ही नहीं पाते. सिर्फ 30-20 में अगर चार्ट देखना है तो 15-10 में वो स्पीड इतनी है, वो पेंट ही नहीं हो पाते. तो मैं तो कभी 15-10 में एनक्यू नहीं देखा. नहीं नो, ये प्राइस ये है. असल प्राइस डाउन इसकी ये वाली है. वो जो चार्ट्स पे आने की वो डिले आएगी क्योंकि कंप्यूटर ने उसको पूरा प्लॉट करना है ना. So all right, we are inside almost our R2 zone, guys. 500 is there. And it has jumped to our area now, 5.8, 5.10. So be ready if you're taking any trade from R2. There you go. We're inside R2 now officially. Let's see.
Tested R2 from 15 to 5. Let's see. There's a bit of a divergence. If R2 gets respected. Can I use full Ninja Trader now? हाँ जी मैं अभी बस एक एग्रीमेंट करना है इधर. You're good to go. Account is set up. Trade await login. Sorry, got distracted there due to. From 510 to 500, 10 points are done. ये आपका यूजर नेम पासवर्ड है लेजेंड का. अच्छा ट्रेडोवेट का. हाँ जी हाँ जी. Can I save it? Yes, yes. And the area for ES is done as well. You can say 10 points came from 510, but still should be more. Should come down to like 480. It's testing R2 one more time. There you go. Somebody took 10 points from R2. Let's see. Back to test 515. 3 points done. Yes, good. Now अब आप निंजा खोलें तो इसको इसको सिर्फ नहीं 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 अभी सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन कर दूं. Pushing up R2 of upper range now. 519, 520. Newer high 523. कंप्यूटर आपका स्लो इतना क्यों?
या नाम डाल दें। Newer high made 525. 526. Price is stuck inside R2 now. $550 सही नहीं है इसके अंदर। हाँ ठीक 600 ठीक करेक्शन आ गई है, काफी नीचे से आ रही है, ऑलमोस्ट कितना 250 पॉइंट चढ़ गई है, तो यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए। 550 Yeah, 510 should be okay. Like I mean, because upper range भी 24 तक तो हो गई है, हाँ so it's coming down though. ओके सर, ये जो अब आपकी वेबसाइट है ना, यहाँ आपने सारा देखना है एपेक्स की तरह। 25,000 को लेके जाना है 26,500 पे, और ये आपके पास 1,500 है। तो ये लाइव तो ये अब आपने बुक मार्क कर दिया ये ना। बुक मार्क कर दिया, ये अब आपका लाइव टेस्ट है। मैं आपको इसको निंजा के साथ जोड़ देता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैंने गोल्ड ट्रेड राइट नाउ, सो आई वाज शॉर्ट फ्रॉम अप देयर। गुड, क्लोज इट, क्लोज इट, क्लोज इट, ग्रेट, गुड। आई वाज शॉर्ट फ्रॉम 30 से शॉर्ट था गोल्ड, 30 से शॉर्ट था मैं, पूरे 30 से। सर सर $15 लिए मैंने, निकलना है। आपको इतना बड़ा बड़ा अलर्ट आया था कि 30। हमेशा आप बहुत कंसर्वेटिव जाते हैं, मिस कर जाते हैं। देखिए यार, देखें 30 जो है कुछ तो देगा, वो देखें बच्चा। रात से ना हाँ हाँ 85 ठीक है, to 65 ठीक है, दोनों प्रॉफिट पे रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। मेक सेंस। अगर ड्रॉप होगी तो 1 सेकंड में ड्रॉप हो जाएगी। वो रात से रखा हुआ है और ये प्राइस ऊपर जा रही है। मेरे ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ऑर्डर दोनों तरफ लगे हुए, नीचे पड़े हुए। तो फुल होगा तो दोनों ही फुल हो जाएंगे मुझे, मेक सेंस, और ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा तो ऊपर। ऑर्डर नहीं लगा हुआ मेरा, अभी भी ऑर्डर पड़ा हुआ है 85 to 65। अच्छा हाँ, वो प्राइस ऊपर जा रही है। पिछली तो और दिखावा इनका नया नीचे हो, है नहीं, 63 है। मैं एक सेकंड, हाँ जी दिखाओ ये चल रही है 508। सर। नहीं नहीं नहीं, ऐड नहीं,
फास्ट कीप अप कर ये सकते। एक्चुअली राइट चल रही है 5 हाँ 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 देखो नहीं नहीं Four ninety। एक सेकंड द रिफ्रेश कितना कितना बट सर एक सेकंड ਇੱਥੇ ਜਾਓ F ਤੇ 507 490 एक सेकंड मैं एक ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੌਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨ तो ऊपर से इस तो ऊपर ਹਾਂ यहाँ से प्राइस ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ येलो लाइन ये इशू बड़ा अंदर मैंने बिकॉज़ मैथ होगा प्रॉफिट से वो चल रहा नहीं नहीं देखो 507 30-minute चार्ट एक सेकंड रिफ्रेश सर पहले मैं ना एनु बंद करना 1510 अच्छा कंप्यूटर इज टू स्लो टू कीप अप विद दिस सो रीपेंट ही नहीं कर पा रहे एक सेकंड ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ES ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ NASDAQ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ओके सर क्योंकि गोल्ड 4 दिनों से एक्सपेक्टेड हाई एवरीडे लगा रहा है तो आज मैं कहा आज नहीं छोड़ बहुत हो गया यार ये है माई लेजेंड लिखा हुआ So both are stuck in R1 right now. Okay, so आपका अकाउंट सेट हो गया है 10 मिनट्स दें ताकि वो आपका डेटा डाउनलोड हो जाए तो अकाउंट सेट है नहीं मैंने डाल दिया अकाउंट सेट कर हाँ जी डन R2 से यार R2 से और क्या करें यार हाँ मैं तो गोल्ड 30 पे बैठ गया था आपने 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 मैंने 15 लिए पूरे ऑलमोस्ट $15 तक आया है हाँ सो 2 माइक्रो से हाँ गुड इनफ स्कैल्पिंग अब बाय करेंगे अगर ये आती है नीचे उन्होंने 35 पे गए थे वो और कंजर्वेटिव उनको कोई परवाह नहीं हो गया सर ठीक है जी हूँ बैठो इन्नी दसते हो मैनू ताकि मैं स्ट्रैटेजी इंपोर्ट कर दूँ नो प्रॉब्लम
है जी। थर्ड कैंडल मुश्किल लग रहा है, R2 के ऊपर है, मुझे पसंद नहीं है इसको, मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो इतनी क्लाइम करके आई है। लुक एट 30-20, देखें यार 96% है, इसको अब नीचे ही आना चाहिए। एक रिट्रेस तो दे मिड बैंड तक फिर जाए। इस पॉइंट पे थर्ड कैंडल चल सकती है, लेकिन अब उसके बाद जगह ही नहीं ऊपर। which is micro, ES micro कौन था? MES September 2025 ES micro. So now let's see if it gives us a big retrace around now. Let's see. Hopefully. At least 20 पॉइंट तो मिलने चाहिए, 25। Sir, I have 4 charts now on the screen. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 3 चार्ट्स तो होने चाहिए ना आपको। 4 है, 3 charts और ये एक डॉम है, एक down. हाँ वो तो नॉर्मल है, ठीक है। See, it's struggling very hard to struggle. There's any does 1644, ठीक है। ये सिर्फ एटीएम आपको समझाने के लिए कि कहाँ ऑर्डर लग सकते हैं, इसको बिल्कुल अनअटेंडेड ना छोड़िएगा, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो सिर्फ देखने के लिए कि थर्ड कैंडल रिजेक्शन कहाँ लगती है, सिखाने के लिए एक्सेप्ट कर लें जी। Again back to R2, NASDAQ 11 o'clock candle. Let's see if it gives us a reversal. Bad news, but market is up. There you go. That's what NASDAQ can do. और उनसे पूछ क्या है? How do you? आया सब कुछ, हाँ जी, फर्क पड़ गया। हाँ जी। क्योंकि NASDAQ 1510 जो है ना, इतनी तेज वो बैंड करता है कि उसके बाद मेमोरी खत्म हो जाती है। आ जा भाई, नीचे उतरा, एक ही कैंडल पे फंस गया है। Because NASDAQ wants to come down from R2, so does ES. But look, pure straight. See, now we will go import, and we will import की फाइल दे दे। ने डाउनलोड की थी उस दिन, डाउनलोड है स्ट्रेटजी, कब की? हेलो जी,
ATM 1515 कहाँ डाउनलोड की थी? नहीं मैं चलें दोबारा कर लेते हैं, लॉग इन करते हैं सुपर। Let's see. That one candle is stuck now at 62 for quite a bit. There you go. One है नहीं नहीं, लेकिन अभी 4 ticks तो मिलने चाहिए ना। ये तो हमारी स्ट्रेटजी है कि 4 ticks मिलेंगे तो पास होगी ना, but it is struggling. चार टिक दे गया। Yep. Okay. आपने अकाउंट खरीदना है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक दिन आप लेट हो गए हैं, सारी सेलें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको रेगुलर प्राइस पे मिलेगा अबाउट $50 का। नहीं नहीं, एपेक्स की भी सेल ख़त्म, सारों की सेल ख़त्म हो गई है 90%। यस्टरडे वाज द लास्ट डे। तो मैं आपको 5 मिनट दें, पहले इनकी स्ट्रेटजी करवा दूँ, देन आई विल कम टू यू गाइस, नो प्रॉब्लम। देखिए इस पॉइंट पे ना वो 4 कैंडल देती है, डाइवर्जेंस बनाती है और नीचे आ जाती है, राइट? बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग। क्या आपका एनी डेस्क? Okay, let's download this and import file, import. See, it's 3 up and 3 down. It's messed up at the moment because NASDAQ is not dropping, so horrible style. 3 ऊपर and 3 नीचे. So indicator, it says strategies. ये वाली यहाँ अपना रखें यूजर नेम पासवर्ड सुपर एरियाज का।
Yeah. एक second. We have to do tools. So strategies on हो गई. So we will go inside Ninja Trader. इसको जब आप ऑन करेंगे, so it can authentication, okay. So now we'll automatically start placing orders based on the. That's it. Done. No problem. So स्क्रिप्ट के पर ये प्रॉब्लम sorry. ये स्क्रिप्ट है डिफॉल्ट ये सुपर एरियाज में लिखा, आप जाएं ऊपर डाउनलोड्स में लिखा हुआ है, तो इसको डाउनलोड करें. पूरी इंस्ट्रक्शंस भी हैं और वीडियो, अभी वीडियो नहीं बनी है इसकी. स्ट्रक्चर है इंस्ट्रक्शन है. हाउ टू यूज थर्ड कैंडल. किसकी इंस्ट्रक्शन है? कि हमने एक स्ट्रेटजी आपको सिखाने के लिए बनाई है कि व्हेन देयर इज ए थर्ड कैंडल रिजेक्शन हाउ दिस ऑल वर्क्स, कि अगर आपने यहाँ से बाय करना है तो कैसे स्टॉप, उसको सिखाने के लिए रखा है. सुपर एरियाज में लॉग इन करें, वहाँ लिखा हुआ है आपका स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी लिखा हुआ है डैशबोर्ड के किनारे डाउनलोड्स में, डैशबोर्ड के अंदर. हाउ टू यूज ए थर्ड कैंडल रिजेक्शन. नहीं लॉग इन करें, वो लेफ्ट पे नीचे, वो लेफ्ट पे लिखा होगा डाउनलोड्स, और नीचे आए, यहाँ कहीं डाउनलोड्स है. एक सेकंड. नहीं आप बैक पे जाएं, क्योंकि आप तो स्टडी के अंदर है ना. बैक पे जाएं. नहीं यहाँ से बैक पे नहीं. चलो ठीक. हाँ वो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है. आ गई जी प्राइस तेजी से नीचे आ रही. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. आ रही है जी, उतर रही है, उतर रही है, उतर रही है. पर चल ही नहीं रहा है मेरा तो निंजा ट्रेडर इसमें बोलते. नहीं अभी अभी आपने अभी अकाउंट खरीदा है ना, तो आप कनेक्शन में जाके लेजेंड में कनेक्टेड है. कनेक्शंस कहाँ मिलेंगे दिस एरो पे? ये थोड़ा सा ना आपको पहले ऑफिस में बैठना पड़ना है, क्योंकि आपका बहुत बेसिक्स मिसिंग है. कंट्रोल सेंटर में जाएं, कनेक्शन में जाएं अपना. ये अल्गो लेवल इंस्टॉलेशन गाइड है. जी जी. भाई लेजेंड्स राइट. यस. So it's testing the mid band right now on 1510. तो इसको सेटअप करके फिर वो अपना आएगा, दिखाएगा कि कहाँ से ऑर्डर हो सकते हैं. लेंगे कहाँ से. एग्जैक्टली. तो इट्स कॉल्ड द 3 कैंडल रिजेक्शन. जब ब्लैक कैंडल नहीं बन रही होती ना, तो मैंने पूरा जूम का सेशन किया 2 घंटे का इसी के लिए.
वो रिकॉर्डेड है, अगर आप जाके लास्ट है उसका है ही इसका। किस नंबर का वेट कर रहे हो सर? मैंने भी नास्डैक 520 पे रखा हुआ है, आपने तो 190 पे निकल गया। चलो कोई बात नहीं। नहीं 530 तक तो गया था, 526 तक गया था। 520 पे नास्डैक आपने सेल किया है? 520 पे 490 का प्रॉफिट। ले लिया ना, हाँ डन है ना, ठीक है आपने ले लिया। अच्छा इनकी अच्छी बात है, ट्रेड डाल के हट जाते हैं कंप्यूटर से, देखा जाए। तो इन्होंने सेल किया 520 से और बाई किया बैक 490 से, अपर रेंज ऑफ नैस्डैक R2 के ऊपर से सेल किया ना, वहां से सेल किया और बाय बैक किया नीचे। कैंसिल ही नहीं हो गए। अब R2 से देखें कहां तक नीचे आता है। So R2 is officially done now. If you can exit R2, please. From 510 to 480 is more than enough. So even the live accounts can get out. हो गया जी, आपका डन हो गया, निकल जाएं। Exit now, live accounts. Yes, 30 points he got. Excellent. So now officially R2 done for both markets. And NASDAQ and ES. So if you took 510, you're done, 520, you're done, 515, you're done, all the way. So now we wait for the next number, R3. But it has to hopefully come down to slightly, अभी तो इसको काफी नीचे आना है। R2 से आपने सेल किया चल था? किया जी, क्योंकि हमारे सब रेजिस्टेंस लेवल थे ना, तो वहां से पहले मैंने गोल्ड सेल किया एक्सपेक्टेड हाई से, R2 से नैस्डैक सेल किया और R2 से ES सेल किया। MES, micros, I do micros mostly. Gold went back up, फिर ले गया वापस ऊपर 17 से all the way back up to 29. Gold की divergence 30 minute में messed up, 36, 36, 31. Let's see when does gold come down now. Okay सर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फंडेड का। 5 बड़ी फंडेड कंपनीज हैं, so I'll explain you all since I'm not in a trade. If you like to pick one, so let me see if there is. Okay. So there are funded companies, they are called one stage and two stages. So the one stage company, let me open this as a whiteboard. So
Of course, some of you guys may be doing demo. It's just a demo money. There's not real. It's simulation from NinjaTrader. Demo works for 14 days. So each time you have a new email with NinjaTrader, it works for only 14 days, and then you need a new email over and over and over. So after demo, so let's, if I was to put it, so the next step is funded, and then the next step is maybe 2 stages. First is 2 stages, then you can do 1 stage, and then if you're experienced enough, then you can go your own capital. So this is the recommended pathway for you. Anybody who is starting our program is first you do your demo, then you go inside something called a 2-stage funded program. After that, you can go into a 1-stage funded program if you, but gets a bit costly, and then you have your own money if you like to put it into your own broker. So, so your own broker could be GFF, could be AMP, or could be NinjaTrader itself is a broker now for Ontario. So there are 3 where you put your own money. Now this, let me give you a, let's pick an example of $2,500 US. If you give them $2,500 in your own funds, you get $2,500. So you decide, okay, I know how to trade, I know how to buy, I know how to sell, and I would like to start with my own money. I don't care about any of this nonsense. You have people who do this, right? So here's the thing, go to the bank, open a USD account, wire that to your broker. You will lose $35 USD in the wire fee. So just want to give you a full context. So about $35 money costs to send them, right? So they will receive your money, and they will receive maybe $15 more goes away with processing fee. Then another $12 goes towards your data fee. So when you send them $2,500, they get approximately $60 less. So don't, if you send them and you say, why I got less money, this is, there's a processing fee by your bank here, then there's a processing fee by their bank, then there's a $12 data fee. So you're looking at worst case scenario, best or worst is you are getting $24.50 out of it. So today you decided to send them money, your own money, to any of these brokers, GFF brokers, AMP brokers, NinjaTrader broker. You have to wire them the money. We can use even exchange too, right? Yeah, you can too, but no, these things, no, there's no exchanges. You have to send the money from your real bank. Oh, real bank. Because that's why I recommend open a USD, whether you are in RBC, Scotia, National, BMO, or TD, open a USD bank. Why? It costs $6 a month approximately to open a bank in Canada. In USD savings account, approximately $6. I don't know of any bank that's giving a promotion. And then you don't have to do a currency conversion every time. You're just basically, give me a 1 second too. Just want to make sure I'm not in any crazy trade. So 30 seconds, guys. Okay. Sorry. So if you have a USD bank, then you just deposit Canadians. They'll convert into a USD. They'll wire it. Otherwise, if you send Canadian, Ninja is going to say, well, I receive Canadian. Then it gets messed up. So keep your currencies aligned with your trading. US dollar works everywhere. So open up an account, send the money. This is the ultimate, not recommended. For me,
They should take about a year before you are ready to trade with your money. This is my opinion. Not until you know how to buy, how to sell, CPI, PPI, area, resistance, divergence. Don't put your own money, because you will put this money, you will lose this money, then you will never trade again. This is so go if you're comfortable. Hey, it's your money. Go send 100,000. I don't care. Then don't come crying that I wasn't told. So सब कुछ ऐसे था ना? हाँ तो अब so this was until I would say May of, sorry, to be exact date, August of 2023. Any time before this time, you had no other option. You wanted to get into trading. So this company has been around for what, 2008? Until 2023 August, there was no option. You really had your own money. That's it, right? So anyway, long story short, today you have a lot more options to learn to trade futures at a very low cost way. So there's no investment of your own money. So a company comes around like Apex. Now there are 5 companies that we recommend. You can pick the flavor, however, they have different rules. So 2 stages companies, Apex, Bullnox, Legends, and Take Profit. These are the 2 stages companies, meaning that you have to do a challenge number 1, stage 1 and stage 2. Now, there is a company called Purdia Capital. They don't care about stage 1. They can give you for stage 2 directly into stage 2. It's a 1-stage test, not 2-stage. So now I'll tell you the difference, because why I wrote $2,500 is we want to compare the value of $2,500. If you took, let's say yesterday, you took Bullnox, it was stage 1 cost was $16. Stage 2 cost is $150. And I will write take profit is combined stage $90 till today. Legends is $50. So today he bought Legends, right? So let's focus today, because forget about because prices change. So I'm gonna write $50 you will pay, and you have, they open up an account instant for you. $25,000 is the value, and they will give you $1,500 in it. So your account gets open like that. It's not like a money is coming into your account, you're managing, nothing like that. They'll give you a username, they'll give you a password, and they'll say, this is your account balance. How much money he spent? $50. Okay, so for $50, he got how much? $1,500 to work with. So it's pretty good. So instead of you testing your skill with the real money, you opted in for $50. Now he has 1 month to complete this stage, 1 month. So how would this work? Today is September 3rd. On October 3rd or 2nd midnight, he needs to make $1,500 in 20 days. एक महीना है ना? So this month, from this to this is 26,500. Your exam is passed, and they are just asking, please don't lose $1,500. That's it. Sorry, guys, I'm in a massive short trade. Give me a second, sorry. Okay. Sorry if I'm running in and out of a trade all the time. If you were short, you were making a killing, like I was. I was short from many places. I took R2 and I took a lot of funds coming down.
$875. Sometimes you forget these trades. Okay. आने दो जी, आने दो और गिरो ऐसी की तैसी. चलो, think I'm done my targets here. Sorry guys, I don't. Okay. अब आपके पास 30 दिन है. आपने 30 दिनों में 30 days you have to make this target. Now he has really 5 rules for you. Number 1, make $1,500. Turn this balance into this. That's rule number 1. Number 2, please don't lose $1,500 in total. So your max loss is $1,500. So in your account will always be 1,500 maximum. So the word is used is called max loss. Got it? This is your target. This is so today he puts a trade in and he makes $100. Very good. 2 points a day. If you, for God's sake, I yelled this online. Yesterday, let me tell you a short story. Yesterday, somebody posted a comment on my website. Oh, software nahi chalta. All right. It gives me something to do. I will go aggressively. The guy leaves it randomly, something from YouTube comment. I hunt them down through IP address, this, and then I figure it out who this guy is. I spoke to Daniel and I call him up and I say, hey, what's going on? What are you talking about? He took his Apex accounts and gave it to somebody to trade. And he's like, I'm losing money. I'm like, you're a gambler, man. So if you make $100 a day, this is an easy thing. We have 8 people sitting for you who are helping you to make $100 a day. If you honestly, now I will be very blunt moving forward. If you guys have bought this software, I know it's a lot of money you have spent. If you can't make $100 a day, please donate this software to somebody who needs more than you. Trust me, a person standing at a Tim Hortons doing an Uber job can't spend $5,000, $6,000, $7,000. Quit trading. You can do it. Donate to a family member. They can come and join our program because we have 8 people, 3 in this offices, Vikram or Majid Bhai, Junaid Bhai, myself, Harneet, Murtaz, Tulip, Happy. Our job every day is to make sure you make $100 at least. So if you make $100 a day, you'll be done in 15 days. I don't know the problem. So please don't gamble. Don't think. If you can't trade, follow somebody. They will give you the entries. They'll say, hey, I'm planning to go from here, this. So if he today he makes $100, just remember, they will not give you any extra more than 1,500. You don't have ability to go above 15. But tomorrow you come and you lose $300. Why I wrote 300? If you have lost $300, you're not doing so well today. Please don't finish the account in one day. I mean, don't. It means you tried and you tried and you tried, and today you've already accumulated quite a bit. How much loss will you take? Will you take full account? I don't know. But so if he loses 300 tomorrow, of course, 300 has gone down from here. My handwriting sucks, guys. Sorry. But the next day or next trade, he takes and he makes $200 back up, they will give you the money back. So until maximum 15. So that number, I gave him a website that he has to track live. How much money is to get to the target and how much money is available. Most people look at this, oh, I have $26,000. No, you only have $1,500 and until it hits zero, you're done. Or so number 1, make 1,500. Number 2, don't lose 1,500. Number 3, close your trade at 4:45. Please, this is very critical. अगर आपका ट्रेड या कोई ऑर्डर रह गया तो उन्होंने आपको अकाउंट बंद कर देना है. तो ये तरह देखिएगा, कई गलती से ट्रेड लगा रह जाता है, 5 बज गए. So make sure that you close your trades at
Certain companies want you to close your trade at 4:15. So, but this is 4:45. I know it for a fact. Legends. नुकसान है सारा सर वरना आपका इंस्टेंट अकाउंट बंद करेंगे राइट so this is the thing and number 4 they want you to trade for at least 5 days. They don't want you to finish this challenge in 1 day or 2 or day or 3 days. See, Bullknot says 1 day, Apex says 1 day, Take Profit says 5 days, Legend says 5 days. So if you were to make $500 a day or 300 a day, will take you 5 days to finish the test, right? So this is your exam. 1500 के लिए हमारे पास 5 दिन है नहीं, minimum. Maximum 1 month है. देखिए मैंने लिखा है अक्टूबर सितंबर 3 लिया ना तो अक्टूबर 2 पे फिर इनको क्रेडिट कार्ड $50 चार्ज होगा. टेस्ट है ना आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई खुद ही चार्ज होगा जी. ना चार्ज हुआ अकाउंट बंद हो जाएगा जितनी मर्जी प्रोग्रेस होगा. हाँ 50 ही रहेगा 50 ही रहता है. तो उन्होंने आपको एक क्योंकि रीजन इनकी सब्सक्रिप्शन होती है because if you buy a bigger account they have 50 they have 25,000 50,000 150,000 300,000. Some people like if you buy an account of 300,000 you know how much your target is $20,000. Nobody will be able to do that in 20 days unless you're gambling fast, right? So they said, okay, go to month 2, month 3, and then build it up slowly. So that's. Sorry, दोबारा के मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही और आपने ये सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है तो फैमिली मेंबर को ढूंढें जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको दे दें किसी का भला कर दें आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाली. तो फिर वो कर नहीं वो फिर आप छोड़ दें ट्रेडिंग. अगर आपसे $100 नहीं ना बनते हमारे साथ बैठ के आप ट्रेडिंग छोड़ दें. ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ जनरल पब्लिक हजारों लोग सुन रहे हैं अब ऐसे भाई हंस रहे हैं तो सही कह रहा हूँ ना यार. अगर 100 नहीं बन रहा तो फिर क्या कर रहे हैं इधर. हम आपको रिटर्न गारंटी देते हैं आपके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं. अब तो 8 मेंटर सर पे लगा दिए हैं. कल एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारे साथ बैठा तो उसने ट्रेड डाला. पहले उसने बनाए कुछ हमारे दूसरे ने कहा यार क्या कर रहे हो. उसने अकाउंट उड़ा दिया. गुस्सा हो गया. और भाई ऐसे तो नहीं होता. आप गैम्बल तो नहीं. अब हर वक्त तो नहीं आपको ट्रेड करवा सकता राइट. सो लॉन्ग स्टोरी सर आपके साथ उनके साथ देखें मेरी बात सुने बैठ सकते हैं. आपके लिए बनाया ना यार. यस पहले आपको समझाना भी है. मुझे इसीलिए जो फियर आया ना जब मैंने आपसे कहा कि अकाउंट कनेक्शन करें और आपको नहीं मालूम आपकी बहुत बेसिक फाउंडेशन में गैप है. ठीक है 4 क्लासेस ले ली बहुत पीएचडी कर लिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि अकाउंट टैब क्या है पोजीशन टैब क्या है ऑर्डर टैब क्या है एग्जीक्यूशन टैब क्या है कंट्रोल सेंटर क्या है बाय स्टॉप क्या है सेल स्टॉप क्या है. फिर वैस भाई कहते हैं मुझे ऐसे स्टूडेंट ना भेजा करो. कहने का मकसद ये है कि पहले मैंने आपको बेसिक समझाना है. आप पहले ऑफिस में जाके बैठ जाएं एवरी डे. सर आप आए बैठें तो वहां से ग्रेजुएट होंगे. जुनेद भाई आपको बताएंगे पहला वाला सर विक्रम ना डैनियल जहां उस दिन आप मेरे साथ बैठे थे ना तो सुबह आए वो आप माजिद भाई का गोल है. अब मैं आपसे ये कहूँ क्वेश्चन है यहाँ बैठ के कि R2 से करना है हमने R2 आ रहा है. अगर आपको ये नहीं पता व्हाट इज R2 ये ऑफिस आपके लिए नहीं है. आप पहले डाउनग्रेड जाएं जुनैद भाई के साथ बैठें. अगर वो ये कह रहे हैं बाय स्टॉप करना है सेल स्टॉप करना है और नहीं समझ आ रही एक ऑफिस नीचे जाएं. लेकिन लेवल्स है ना. देखिए यहाँ पर तो मैं आपको निंजा का कोड भी लिखना सिखा दूंगा नो प्रॉब्लम. लेकिन अभी आपको बेसिक नहीं पता तो पहला ऑफिस उनके साथ देखें यार बाय क्या करना है सेल क्या करना है बाय स्टॉप क्या है सेल स्टॉप क्या है मिड बैंड क्या है डाइवर्जेंस क्या है. यहाँ उस वक्त लोग पहुंचे जब मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ यार 60 मिनट में डाइवर्जेंस लगी हुई है इसका क्या मतलब है. जैसे कि आप बोले बेसिक चीजें वहाँ पे पहले आप अपनी क्वेश्चन मेरा ये बताएं जो बेसिक चीजें हैं वो सर ने ऑलरेडी वीडियोस बना के डाली तो वो वही चीज बता रहे हैं. लेकिन मैं आपको 2025 में ये अभी गुजर रहा है 24 में 1700-1800 ट्रायल दिया हमने लोगों को सॉफ्टवेयर के लिए. फिर हमने उनको ट्रैक किया कितने लोगों ने डैनियल भाई के लेक्चर सुने. आप सिर्फ बताएं कितने लोगों ने 4 वीडियो देखे होंगे. पता कितने लेस देन 20 पीपल. वो कहते हैं यार बोरिंग है मुझे सिर्फ दिखा दो बाय एंड सेल. मैं कहा ठीक है भाई तुम लोग ना किसी के साथ बैठ जाओ
अब वहां पर लोग बैठते हैं हैप्पी को $200 देख के, सिर्फ हैप्पी कहता है यहाँ से सेल कर दो, वहां से बाई कर दो। वो आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। अवैस भाई क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अवैस भाई क्या कहते हैं, अवैस भाई के साथ बैठे, वो कहते हैं मैंने सिखाना कुछ नहीं आपको, डिफरेंट गाय। इस ऑफिस में आपको 2 मिलेंगे, तो आप और वो भी आपके लिए ऑनलाइन भी देख सकते हैं। 8 बंदे लाइव स्ट्रीम दे रहे हैं। हाँ हाँ, 60 बंदे स्ट्रीम दे रहे हैं। कहने का ये मकसद था कि या आप टीचिंग लर्निंग करेंगे या अर्निंग करेंगे। मेजोरिटी लोगों को कोई शौक नहीं है सीखने का, कोई शौक नहीं है, ही नहीं है शौक, ठीक है। ये जो वीडियो सर ने हाँ डाली है, या 2023 में सर खुद ही सब बता देते हैं। हाँ, तो अब उन्हें थक गए ना, वो कहते कोई सुनता ही नहीं है, तो उन्होंने ठीक है ना, सैटरडे संडे स्टिल वो आते हैं। नहीं वो तो वही क्या बार बार। हाँ, तो लोगों के पास इतना एनर्जी नहीं है सीखने की, तो हमने आपके सर पे एक बंदा बिठा दिया है, वो आपको बता देगा यहाँ से बाई करो, यहाँ से सेल करो, ठीक है, सिंपल, आसान कर दे बस सर, यही है आपका टेस्ट। $50 है, ये हमने कैसे पे करना? क्रेडिट कार्ड से। हाँ, यहाँ से बैठ के क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, मैं कर देता हूँ, अकाउंट खुलवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरा एक क्वेश्चन है आज आपसे, पहले मैं आपकी हेल्प करूँ। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन ट्रेडिंग? कॉन्फिडेंस क्या लेवल है? 0 है, 1 है, 5 है, 10 है, 100 है? कॉन्फिडेंस बताएं। मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, आई एम सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड दैट यू कैन मेक $100 a day? बस then you are ready from demo to funded. हाँ, 4:45 के बाद मार्केट नहीं चलती है। नहीं चलती है, वो ये कह रहे हैं 4:45 बंद करें, 6 बजे फिर खोल लें, तो 23 घंटे खुलती है, कोई मसला नहीं। एक एक उन्होंने कंडीशन डाली हुई है कि डे ट्रेडिंग 23 घंटे चलती है, सिर्फ आपने उसके बाद फिर 6 बजे खोल लें। अगर आप $100 बना सकते हैं फिर लें, अगर नहीं अभी बना सकते हैं डेमो करें, ठीक। तो ये है। अच्छा, जब आप यहाँ से चले जाएंगे फिर आप स्टेज 2 एंड 3, तो अब आप मुझे दें एनी डेस्क अपने कंप्यूटर का दोनों, ताकि मैं उसमें लॉग इन करूं और आपका अकाउंट सेट करूं लेजेंड का। यहाँ से ऊपर वही तो नहीं, 10वीं में जॉब कर रही हूँ, तो उसकी छोड़ दी थी, अभी नहीं आई, तो फिर मुझे थोड़ा चाहिए टाइम, थोड़ा डिवाइस रिव्यू करके देंगे, उसके बाद बाई करेंगे, अभी कॉन्फिडेंट नहीं। आप दोनों मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अपना एनी डेस्क नंबर, व्हाट्सएप करें 64722। नहीं नहीं, एनी डेस्क आपको डाउनलोड्स में पड़ा होगा, ताकि मैंने आपके कंप्यूटर में लॉग इन करना है ना। दो अकाउंट अकाउंट NASDAQ से सुपरएरिया से खोला हुआ था, दूसरे अकाउंट में NASDAQ मैंने चार्ट पे खोला हुआ था। सुपर जो सा पहला अकाउंट था वो तो चल रहा था, दूसरे अकाउंट ना एकदम हैंग्स आउट, उसमें लॉस में शो। उसका बेस्ट है ट्रेडोवेट खोल के रखें। आपकी कौन सी कंपनी है? फिर अगर ये इस तरह का मसला हो जाए ना, तो आर ट्रेडर खोल के रखें। आर ट्रेडर खोल के वहां से बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी बैकअप होता है। उधर प्लीज प्लीज, क्योंकि अभी आपको बेसिक में से व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ये नंबर मुझे पिक्चर लेके व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं रिमोटली वहां से इधर कनेक्ट कर लूँ। ओके, 647-228-0694। 228-0694 0694। Yes.
भाई तो उसमें वो एटीएम में सेलेक्ट तो नहीं करना ना कुछ भी, करना है उसको, जाके सेट करना है आपको। वो मैंने खुद ही कर दिया, हाँ हाँ इनेबल भी कर दिया स्टेटस। ठीक है, अब वो खुद ही चलता रहेगा। अच्छा लेकिन अभी मेरा जो अकाउंट सेलेक्ट हुआ वो भाई तो ऑटोमेटिक सिम पे, वो ऑटोमेट नहीं आपको उसको अकाउंट को भी बुलनक्स करना पड़ेगा। अगर जब से तो 80 मैं सिम पे करके देखता हूँ। पहले फिर इधर चार्ट में भी सिम कीजिए। यस यस फिर आपने फॉलो किसको करना है? मेरे पास कोई वीडियो होता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं अपना आइडिया दूंगा, मैं फॉलो करता हूँ। इंस्टॉल किए हुए पहले मैं उससे ये जाती है यहाँ पे आगे पर दिन बाद करूँ, मैं और कोई नहीं देखता है और नहीं चलाता। तो जब तक वाली चीज़ तो लेफ्ट नहीं, इसी पे करके देख रहे हैं। बस मैं अपनी मेल अकाउंट यूज टू नहीं पर मुझे आज मेरे 18 जो है ना वो लास्ट में मैंने ट्रांजैक्शन ली, ऊपर नीचे जाके नेट जो आज मैंने क्लोज किया वो 80 बिल्कुल भी नहीं प्लस आ गया। मैं अभी मुझे ठीक है रीलोड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऐप पेज खोल के रीलोड करते हैं। यार वो ऊपर ये पेज के ऊपर राइट क्लिक करें, इसी पेज के ऊपर अभी ये नहीं है, ये नहीं वो बड़ा पेज उसका दोबारा करें। हाँ ये रीलोड पेज हो F5 नीचे दिया हुआ है, F5 रीलोड, हाँ रीलोड कर उसको रीलोड ये। तो ये कंसिस्टेंसी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल लगा था ऊपर जाने फिर मैंने देखा सही है, वो पूरी मार्केट को सही दी थी। तो वहाँ पे ऊपर पे हाँ सर की मैं 2021 नहीं पता वो समय में की वजह करते हैं लेकिन आपको 12 minutes to go before European candle closes. और इधर का देखकर तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा हो कितने ऊपर जा सकती है नीचे आ कौन सा चार्ट खोल सकते अलाउ कर दो भाई। Yes sir. कैसे कौन सा चार्ट नंबर पे एक्सेप्ट जी जी एक्सेप्ट करें। तो बिहेवियर डिफरेंट आगे यस और नो है। यस करें सर, यस। यस करें एक्सेप्ट हाँ मैं ट्राई देंगे अभी तो कुछ नहीं नीचे आना चाहिए। डाउन तो पूछ रहा है डिस्कनेक्ट कर अब ये खुल नहीं नहीं डिस्कनेक्ट नहीं मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ जी। इसीलिए उसको नहीं चला गया ये उसकी वजह से थोड़ी कुछ चीजें आपका आपको समझ में आएगी, सब समझ में आ जाएगी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, थोड़ा नहीं। टाइम लगाना है तो उनको 8 साल लगे तो उनके सिग्नल ले लेना, वो ज्यादा यार वो नहीं लगा हुआ तो है तो हमने इसी वजह से नोट कर लिए ये मैच 400 और 500 के दरमियान में बैठा हुआ है। एक सेकंड मुझे माउस दीजिएगा, मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं जिसका भी कंप्यूटर में यूज कर, दोनों का।
नहीं 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 नहीं, मुझे माउस फिजिकल नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूँ माउस टच ना करें, मैं उधर से एनी डेस्क कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, माय बैड। एनवीडिया बेचारी फंस ही गई है ना, क्योंकि असल में ना उनसे ना ये गलती हो गई। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, 182 में बाई किया हुआ, इस वक्त 171 है। वो गलती क्या हुई, वो स्टॉक नीचे गया था, उसमें उन्होंने क्या दिया कि हमारे सिर्फ दो बड़े कस्टमर हैं। देखिए बहुत अच्छी सेल है, कस्टमर दो हैं, वहां से लोग ना थोड़े पैनिक हो गए कि अगर एक कस्टमर। हाँ, मैं तो 200 तक का वेट कर रहा था, उस दिन ब्लैक लगा के बैठा था। हाँ हाँ। नहीं, वो पहले थोड़ा सा स्पाइक नीचे आई 17, लेकिन अगले ही दिन रिकवर कर गए थे। या काफी ड्रॉप है 10-11 जैसे कवर करने में टाइम लगेगा। साथ जाओ वैसे तो होल्ड किया जाए, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाएगा। इमोशन का खेल ऐसे ही ये मैं ये बात कर रहे हैं ये फॉलो करेंगे मिला इंडिपेंडेंट होकर ट्रेडिंग करनी अभी यही कर रहा हूँ। और अभी तक जो वो 38 तक बात हो रही थी, वो इतना ज्यादा प्रोसेस इस तरह बहुत आता है उसको बड़ा। ओके वो बहुत सी चीजें अभी वो तो बस कुछ तो अभी आप नए आए हैं ना, वो नए बंदे को पता ही नहीं चलता, वो तो फॉलो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। वो जो वहाँ पे फॉलो करने को बोला है। आप दोनों अब ये फॉर्म भरें लेजेंड्स ट्रेडिंग का। नहीं, हाँ जी हाँ जी, इसको इसका नाम भरें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें। SRES, no, no SRES, they're kind of weak. वो छोड़ दें, जो ड्राइवर लाइसेंस पे जिस तरह लिखा है ना, तो फर्स्ट और मिडिल को इकट्ठा कर दें ड्राइवर लाइसेंस पे जो हो, क्योंकि जब उनकी पेमेंट आपको आने है ना, तो ये लीगल नाम होना चाहिए। All right, time to wrap it up. पासवर्ड नहीं हम क्रिएट करें। हाँ जी सर, पासवर्ड भी क्रिएट करें। थोड़ा मैंने घबराहट हो रही है इस क्वेश्चन तो, छोटे छोटे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ याद करना कि ये तो आगे जर्नी बहुत लंबी है। लेकिन हमने ये बकायदा अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम कर दिया। माजिद भाई, जुनैद भाई, फिर इधर, फिर डैनियल, उधर पहुंच। तो पहले आप अवैस भाई के क्वेश्चन पास करेंगे तो डैनियल से क्वेश्चन। सेंटर में बैठते हैं जुनैद भाई, वो करते हैं स्लाइटली एडवांस, लेकिन माजिद भाई और विक्रम भाई का गोल है यार 100-150 बनवा दें। अगर थोड़ा इधर आए, वो जरा 250-500 वाले हैं, इधर आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि R2 से सेल कर दें। मैं एरिया वाला हूँ, हम लोग फिर आगे तो क्या कहते हैं कंटेंट से शुरू होते हैं, फिर इधर आके चलो कहानियां बेसिक तो चीज है कि बेसिक किताब है, वो तो कम से कम तार ले वहाँ बिल्कुल। ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਓ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। बड़ी प्यारी रिट्रेस दी है उसने, दैट्स ग्रेट।
नहीं नहीं नहीं, इसने ईएस और नैस्डैक ने R2 से पूरी प्रॉपर रिट्रेस दी है। तो ये काफी बना दिया R1 तो आपने भी R1 से ले लिया, तो मैंने R2 से भी लिया। R2 तो लेके थोड़ा जब घट रह गया फिर मैं R1 की दोबारा वेरी गुड। क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही भाईजान? यहाँ लिखे ना फ़ोन नंबर। आप ना आपका नम पैड ऑन नहीं है। अब लिखें जी। ये मैंने किया NASDAQ माइक्रो 4 minutes and European candle is gonna close. So हैंग ने काम कर एक ने बना दी है। आपने अपनी ईमेल वेरीफाई कर दी है सर? ओके ठीक है, अब इधर लॉग इन करते हैं। आपने दोनों ने मेरी बिगिनर्स गाइड निंजा ट्रेडर की वीडियो देखी हुई है कि बाय सेल स्टॉप लॉस? वेरी गुड, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो पता है ना। वेरी गुड। Emmanuel, sorry, I don't reply any on Telegram. I mean, Zoom. You have to send me a WhatsApp message. So I know you want to talk, but the best is if you can send me a WhatsApp, because I don't look at Zoom at all. I only look at. बिजनेस गाइड निंजा ट्रेडर में वो सारी निंजा के बारे में बताते हैं, क्या चीज़ कैसे करना होगा, चेंज करना, वो चीज़ें। सर रिदमिक में जाके कहाँ से बंद करना होगा? रिदमिक में जाएं, ट्रेडर डैशबोर्ड में, और वहाँ पर मलिक साहब पूछ रहे हैं आप खामोश क्यों हैं? कुछ वो कह रहे हैं अभी कोई इंडिकेट अब लगता नहीं है कि नीचे जाए, ये ऊपर गए। फंस गया है 30। और कितना चढ़ना है यार, कितना? अब ये सर फॉर्म भर दें। आप लेट हो गए थे भरते भरते, दोबारा भरें फॉर्म, दोबारा भरें। हाँ, कोई नया पासवर्ड बनाए ना इस वेबसाइट के लिए। सर इसमें जाके क्लोज कैसे करना है? हाँ, राइट क्लिक सबसे नीचे लिखा है पुल वर्किंग पोजीशंस एंड एग्जिट। तो ये सब कुछ कहा, अगर चल रहा है ट्रेड नहीं 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 नहीं, फिर दोनों दफा कैंसिल कर देगा। ओके, यहाँ क्रेडिट कार्ड लिख दें। सर आपने ना देखें वो ये डैश डाली है एक से। आईडी कार्ड पे भी नहीं नहीं, आपने वो डैश कॉमन ही डालना था, आईडी कार्ड वाला। चलें अब यहाँ लिखें प्राइसेस, अपना पासवर्ड दोबारा लिखें। निंजा बंद कर दे तो वो ਹੁਣ स्ट्रेटजी बंद हो जूगी जो हाँ जी, हाँ जी, दोबारा नहीं नहीं, सिर्फ उत्थे ही पे रहेगी, उन्होंने जाके सिर्फ चेक बॉक्स इनेबल करना। होपफुली इस वीक में तीसरी द वर्जन थोड़ा मैं स्लाइटली अपडेट करना है, क्योंकि अगर ब्लैक कैंडल आई हैव आइडिया कि ਉਹ ਡਬਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3 ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, 17 ਟਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਟੀਪੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ 4 ਟਿਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ 15 ਠੀਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ है। सर पासवर्ड बना लेना। वो मिल जाता है। एक सेकंड, एक सेकंड।
स्पीकर्स। सर अपना ईमेल दोबारा डालें, एक सेकंड। आप पासवर्ड दोबारा लिखें, लिखें जरा, साइन अप कर दें जी। एक सेकंड, आपने हर बॉक्स को पहले चेक करना है। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं उनका करवा दूं, फिर वो आपकी असिस्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। ट्रेडर में जो लाइव अकाउंट है उसमें पासपोर्ट नंबर सब कुछ मांग रहे, दे सकते हैं? देना है सर, देना है, उसके बगैर नहीं चलेगा काम। तो बैंक को जाके इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा? हाँ, या देखें अपने डेबिट कार्ड से भी हो सकता है, तो क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा? क्रेडिट कार्ड से नहीं करते वो। रजिस्टर का बटन दबाना है। जी जी। रजिस्टर का बटन नहीं चला। ना तो नौकरी लगी जल्दी जाओ। ठीक है जी। ये आपकी है। नीचे बॉक्स किया आपने? एक सेकंड, ये देखें ना, बेसिकली दोबारा करते हैं। असल में आप पासवर्ड डालते डालते ना थोड़ा लेट हो रहे हैं और वो कैप्चा एक्सपायर हो जाता है। आप दोबारा क्विकली भरें, उसमें टाइम होता है। हाँ, मेरा बटन नहीं काम कर रहा। वो शाह का कैपिटल नहीं है उसका। नहीं नहीं, आप ना ऐसे करें, चीज़ें पहले नोट पैड में लिखें, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें इधर लिखें, मैं दोबारा आता हूँ।
ये नोटपैड जो मैंने अभी हाँ जी, इसके अंदर आप अपनी ये सारी डिटेल लिखें, मैं जल्दी से ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, ताकि मैं यहाँ से आपके लिए कॉपी कर लूँगा। ओके सर, ये बिशारत साहब, ये आपका है यूज़र नेम और पासवर्ड, ये उन्होंने आपको दिया अकाउंट का, तो इसकी फ़ोटो ले लें, इसको कॉपी कर लें। सो हो गया। हो गया जी कॉपी, एक सेकंड में। अच्छा पासवर्ड भी वजन लिख दूं मैं? पासवर्ड लिखते हैं, मैं कॉपी कर लूँगा जल्दी से। वजन लिख दिया। ओके, 2 मिनट दे बस। सैयद गुलाम अली तो डॉट काम पूरा नहीं है। मैं भी है। ब्लेस यू जी। It says password cannot have 1 2 3 4। ओके इसको शॉर्ट कर। ये कर रहा हूँ, ये मसला था क्योंकि आपने पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 रखा था, 4 5 5 और आई लो। हो रहा है जी। Okay.
सेव कर दो वजन पास कर। हाँ मैं अभी कर लें। अब आप अपनी ईमेल चेक करें और वेरीफाई लिंक पे क्लिक करें। ओके फिशर साहब, ये वेबसाइट है, इसको मैं कर रहा हूँ बुकमार्क आपके न्यूज़ के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर आपने दो कॉलम देखने हैं सिर्फ। एक कॉलम में लिखा हुआ है 25,000, एक में लिखा हुआ है 1,500। 25,000 को पहुँचाना है हमने 26,500 पे और 1,500 जीरो ना हो, बस। और कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। तो कितने पैसे रह गए हैं, वो 1,500 वाला कॉलम है ये वाला, और कितने अकाउंट में पैसे टारगेट तक पहुंचाने हैं वो 25,000 सिर्फ। क्योंकि कई दफ़ा होता है लोग कहते हैं यार मेरे अकाउंट में तो अभी 26,000 पड़े हैं, वो नहीं है, 1,500 वाला फ्री। तो इसको मैंने बुक मार्क कर दिया। अब मैं इसको आपके निंजा के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और आप जब ऑन करेंगे तो आपको दो अकाउंट मिलेंगे, सिम और लेजेंड। तो आपको आपके पास 1 मंथ है इसको करने के लिए। कोशिश करके अगेन फर्स्ट रूम में बैठे हैं ताकि वहाँ आपको थोड़ी सी ना बिगिनर्स मेरे हिसाब से तो चाहिए। इस रूम में पहले वाले माजिद भाई या जुनैद शार्ट लिस्ट नहीं, वो तो जो वहाँ विक्रम भाई भी तो बैठते हैं। हाँ हाँ बैठे हैं जब तक आप रेडी ना हो जाए। ये देखें अभी मैंने लॉगिन किया, ये 10 मिनट्स के बाद ये सही हो जाएगा। तो आपका अकाउंट अगर आप यहाँ देखें दो आ रहे हैं, सिम और, तो आप तो 100% डन हो गए, ठीक है जी। इसको कर देते हैं बंद, डन डन डन, ऑल डन जी। मैं कर गया हूँ लॉग आउट आपके कंप्यूटर से। आप अपनी ईमेल वेरीफाई किया आपने? जी मैंने कर दिया, ठीक है जी, वेरी गुड। वो पैसे भी डालने हैं ना अभी बीच में इसकी क्रेडिट कार्ड से। नहीं नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी पे नेक्स्ट करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। उसको मैं सेट कर रहा हूँ, $50 US है। तो अब तीन चीज़ें हो सकती हैं, या पास करेंगे या फेल करेंगे या रोल ओवर। पास किया तो राउंड 2 में चले जाएंगे, फेल किया तो वापस राउंड 1 करना पड़ेगा। तो $50 डालने पड़ेंगे। ऐसा ही है, नहीं एक्सपेंसिव हो जाएगा ये ना हो 50 50 50 करते करते 1,500 डाल दें। यहाँ तक आ गया ना, आगे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर यहाँ तक आना एक आगे जाना, सारी गेम डिसिप्लिन की है बस, दैट्स इट। उसमें और कुछ है ही नहीं है। सारा टाइम R2 के लिए बैठे रहे, वहां से सेल किया, आ गए। लेकिन ये फार्म भर दें हम, आपको मैं लॉग आउट कर चुका हूँ, ऑल डन है। हाँ जी जस सर। हाँ नो है, सॉरी आज डन है सर, कल से स्टार्ट कीजिएगा, ऑल डन। कर दिया मैंने, सारा कुछ सेव कर, खोलेंगे तो रेडी होगा। हाँ नो नो करना है। You're still streaming? Nice. No, I just closed. I just shut. अच्छा मैं दो रिक्वेस्ट हाँ जी बस एक सेकंड। 成立的时候，共产国际还为中国共产党提供经济上的支持，每年向中共一项提供25000个经费。共产国际还向中国骑兵司令支持顾问德国人中正央饭店送出了共产国际远东情报局负责人波兰籍的游览夫妇在上海租借贝利。游览是苏联10月革命中中东的指挥员，是上世纪30年代共产国际在上海管理空前的情报共电经费的局。他的背影正是苏共中央和共产国际最高层。游览手中掌握着各国共同经济更重要的游览还把大量的权力文件。一旦浏览叛变，共产国际在各国的地下活动人力是在
所以，不只是不能学习出席一切的起因，并派所有人员参与稳固和协调，靠上得罪别王的所有人亲自参与研究行动。索尔德用$30,000的重金收买公会后，请求罗导的想为和平险后在上世纪30年代。方案是一个天文数字，其他所有者也只有这个样式。大使馆苏联中央已经被迫迁到江西，帮不上众筹和计划。于是，印场国际领导基里科洛夫决定启用宋庆龄这份棋子，在游览内陆的2个月后，宋庆龄下请经苏联回国安放在计划。他头上क्योंकि साडा सिस्टम ठीक है जी आज कैमरा बंद कर दो ऑफ कर दिया था अच्छा ठीक है बस ये ऑन नाउ इट्स ऑफिशियली हो गया अनलिंक कर दिया था वेरी नाइस राइट लाइव स्ट्रीम चल रही है नहीं सर बस अच्छा सर वो अच्छा ये सॉरी सॉरी मैंने कहा S1 से भी ले लें उनसे कहीं हर तरह से मैं कह रहा हूँ लें हर तरफ से लें और वापस दें ताकि गाड़ी 100 ही लेके जाए सर अब मैं R2 से लोगों को शॉर्ट करवाया है नैस्डैक पे भी पॉइंट के बाद भी नहीं हट रहे तो क्या करूं इससे मैंने 11 बजे बंद कर दिया सर ठीक है अच्छी बात चल थैंक यू आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कोई बात नहीं एक सेकंड मुझे पहले कोड डालने दें आपने फुल प्राइस पे तो नहीं ले लिया अब आप अपना यहाँ डाल दिया अपना फिबोनाची एक मैथमेटिकल इक्वेशन है एक सीक्वेंस होता है मैथ के अंदर तो अगर आप इसको आसान तरीकों में ये बताऊं आप अपना ना जो वो कह रहा है वो फॉलो करें टीडी की ऐप का वो कह रहा है टीडी की ऐप खोलें वेरीफाई परचेस करें अपने फ़ोन पे ऐप खोलें जी टीडी की ये बच्चों का झूला देखा है ना स्विंग आप स्विंग को पुश करें ठीक है लेट्स से स्विंग की एक फिजिक्स में जाती है ना स्विंग ऊपर तो एक पॉइंट तक जाएगी वो कितनी पॉइंट तक वापस आ सकती है वहां पर फिबोनाची के सीक्वेंस का एक मैथ होता है तो कि अगर उसने स्विंग ने गया लेट्स से स्विंग गई 30 पॉइंट्स तो हमारी नैस्डैक में या ईएस में स्विंग 30 पॉइंट्स गई और वहां पर ब्लैक कैंडल बन गई स्विंग जहां तक गई उसके बाद जो ब्लैक कैंडल बनी वहां तक कितनी नीचे आ सकती है वो फिबोनाची के लेवल्स होते हैं सो अगर आप जाएं superareas.com पे तो वो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है सुपर फिबोनाची वो टॉप पे लिखा हुआ है सुपर एरियाज के होम पेज पे सुपर फिब लिखा हुआ है होम पेज पे हैं सबसे ऊपर टॉप मेन्यू में सुपर उस पर क्लिक करें सुपर फिब ना हाँ यहाँ गया ठीक है अब नीचे आए यहाँ लिखा है चार्ट कॉन्फ़िगरेशन हाँ जी अब यहाँ कोई नंबर लिखें फॉर एग्जांपल 639 नहीं ये तो सैंपल है आपको मैं स्विंग साइज दिखाता हूँ अब चार्ट खोलता हूँ अब यहाँ लिखें 6425 यहाँ पर टाइप करें
एग्जांपल में स्विंग साइड में नहीं ना, एंकर प्राइस। अच्छा एंकर प्राइस। ये आपको 30-20 की स्विंग में बता रहा हूँ, अभी 30-20 का नंबर वहां से पढ़ रहा हूँ। चले 646425। 25 अब स्विंग साइज लिखें 19.25। 0.25 हाँ जी, हाँ जी। फिर और अब हायर हाई से नीचे लिखें जनरेट चार्ट। मतलब हाई में कुछ ना करूं, जनरेट चार्ट पर जनरेट चार्ट। अब यहाँ कंप्यूटर ने आपको 5 लेवल दिए हैं। अब जब जनरेट चार्ट पे दबाएं कि यहाँ से पॉसिबल है प्राइस बाउंस बैक कर सकती है। आपको एग्जैक्टली 6459 दिया, 6456 दिया, 6454 दिया, 52 दिया, 49 दिया कि अगर यहाँ से आप बाइंग करेंगे ना तो यहाँ पर ये पॉसिबल रिटर्न्स हैं। ये कह रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वर्ड यूज होता है। 6425 का नहीं, वो तो आपका ओरिजिनल नंबर है ना, वो तो आपका और हायर हाई से। तो नीचे आके बता रहे हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर बाइंग करनी है तो ये 5 लेवल से बाइंग हो सकती है। यहाँ पर 6409 हाँ जी, 6413 हाँ जी, 6415 यहाँ से बाइंग हो सकती है। तो हाँ, तो हम मैंने कहाँ से ये नंबर लिया? स्विंग से। स्विंग से लिया जो मुझे नंबर दिया आपने एंकर प्राइस और स्विंग साइज का, तो वो आपने कहाँ से लिया? आपने 30-20 की चार्ट से लिया? 30-20 के चार्ट। अच्छा, दोबारा करते हैं। ओके 30-20 के चार्ट। ओके नहीं सर, कोई और कार्ड डालें फिर यहाँ। चलें एक और ट्राई करते हैं। अपनी ऐप खोलें, दोबारा बंद करके दोबारा खोलें। टीडी की ऐप खोलें ना। ये टीडी की नहीं, वीजा कार्ड मैंने डाला था, वीजा ही चलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन दोबारा खोलें टीडी की ऐप। टीडी की ऐप नहीं है? नहीं, मेरे पास ऐप नहीं है, वो मेरी बेगम के पास है। वो उसके वहां पर उन्हें यस करना है। अच्छा, उसको हाँ, क्योंकि ऐप उनको चाहिए ना। आपने लिखना है टीडी की ऐप पे जाएं, वहां पर अप्रूव का बटन दबाएं, फिर आपका अगला काम होगा। और टीडी की ऐप पर ना यस अप्रूवेशन पूछेगा, यस दबाना है। आप नहीं, वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिए। आपके पास कोई और कार्ड है? नहीं, और कार्ड नहीं। एक दफा और ट्राई करना। अप्रूव कर दिया? नहीं, वो डिक्लाइन आ गया मेरे पास ना, दिस कार्ड वाज डिक्लाइन। और चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं ना, वीजा कार्ड यूज। एक दफा और करना, अप्रूव का बटन दबा दें। अप्रूव का डबल बटन दबाना। अप्रूव कर दे। आपने क्या नंबर दिया था मुझे? 6425 क्या देखा? 646425। 6425। तो यहाँ स्विंग से आपने 30-20 की चार्ट दिया, ये पढ़ा ना नंबर। ये 64564 है। कितना है? 6 नहीं, 646425 है। हाँ 0.25। हाँ जी, हाँ तो हो गया। ओके नहीं सर, वो कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, आपको कार्ड चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा ये। कल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये परसों कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, ठीक, आराम से है, क्योंकि जब तक कार्ड सामने नहीं होगा ये काम नहीं होगा। कार्ड मेरे गाड़ी में एक दूसरा भी है, वो ले आए फिर, ठीक। सुई का चार्ट है ये मेन पेज की। हाँ, वो लिखा हुआ सुपर फिबोनाची, वो सुपर फिबोनाची जो ऊपर बॉक्सेस बने हैं। हाँ बॉक्स। फोर्थ वन अच्छा, सुपर ब्लैक कैंडल एक है, सुपर लेफ्ट फिबोनाची से। हाँ ये वाला। नीचे जाए जी। हाँ ये नंबर वहाँ पे डाल दे एग्जाम्पल में, जो नंबर वहाँ पे स्विंग स्विंग का बोला ना आपने।
ये नंबर जो नीचे का नंबर है जो यहाँ swing- वो जो भी स्विंग है, झूला ऊपर गया ना, उसने जब वापस आना है तो सबसे वो गोल्डन रेशियो और वगैरह बता देता है, यानी कि जहां से वापस आ रही यानी कि जहां तक वापस आई जहां तक आ सकती है, पॉसिबल है। इसको भी इसको भी तोड़ सकती है, ऐसे नहीं है कि, लेकिन ये कुछ प्रिडिक्शन आ जाती है कि यहाँ से इसको कुछ पॉइंट मिलने चाहिए। ओके All right, see you guys tomorrow at 9:30, 9 o'clock.